Over the last few years, the online tutoring business in India has developed rapidly with the help of technological innovations and extensive usage of the internet. Phones और laptops students की life का एक inseparable हिस्सा बन गए हैं. So it makes sense that the process of learning and education also adapts to this medium. और ऐसे वक्त में जब सबको काम करने के नए डिजिटल तरीकों को अपनाना पड़ रहा है, online tutoring has emerged as a legitimate profession. In this video, we look at what online tutoring is and how you can become an online tutor by following these steps. So, let's start. तो online tutoring exactly है क्या? Online teaching is basically the practice of teaching an individual or a group using the internet. Online tutoring jobs can be divided into three broad formats. Some tutors teach directly through the internet, through video classes on YouTube or through ebooks. Other tutors give personal classes through video calls. इन tutors को आप online portals के through या directly भी contact कर सकते हैं. Another way to get into online teaching is to work with online edtech platforms like Vedantu, Byju's, Khan Academy, etc. ये platforms आपको एक fixed salary structure और एक formalized pattern of teaching offer करते हैं with a lot of other benefits. With that out of the way, let's look at the things you need to keep in mind if you want to make a career in online teaching. The very first thing is to decide what you want to teach. Online teaching की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप कुछ भी सिखा सकते हैं, as long as it's a student anywhere in the world who wants to learn. It can be school subjects such as math, science, and social studies. But it can also be things like music, dance, or any other form of art. A lot of students are also looking for language teachers. तो सबसे पहले अपने subjects narrow down करें. The next thing to decide is which format of online teaching you want to opt for. क्या आप pre-recorded sessions YouTube पर डालने में ज़्यादा comfortable है, या क्या आप personal video calls पे individual या group classes लेना prefer करेंगे, या क्या आपको एक fixed salary structure चाहिए और एक professional setup में काम करना है. Whatever format you go for will decide what you have to do next. You can also opt for more than one format depending on the time you have. पढ़ाने का format आप कोई भी choose करें. कुछ इक्विपमेंट है जो आपको डेफिनेटली चाहिए होगा एज एन ऑनलाइन ट्यूटर ताकि पढ़ाते वक्त सब प्रोसेस स्मूथ रहे. फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ स्टेबल एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर टीचिंग वीडियो कॉल के जरिए होती है. नेक्स्ट यू नीड अ पीसी और अ लैपटॉप विद अ वेबकैम. लैपटॉप या पीसी की बड़ी स्क्रीन के थ्रू पढ़ाना आसान हो जाता है बजाय एक फ़ोन की स्क्रीन की. अगर आप अपनी क्लासेस खुद ले रहे हैं बिना किसी एडटेक स्टार्टअप से जुड़े, तो आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी. Zoom और Google Meets इस फील्ड में सबसे पॉपुलर और यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं. इनका बेसिक वर्जन बिल्कुल फ्री है और कुछ एडवांस फीचर्स के लिए आप पेड प्लान्स भी ले सकते हैं. Google Drive can be used to save test papers and worksheets and other such stuff. This can then be accessed by the teacher and the students from anywhere at any time. पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले ट्यूटर्स के लिए मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है to get their business started and attract students. Best way to do that is through social media and a website. Make your tutor page on Instagram and Facebook and let your friends and family know that you're looking for students. Another good idea is to create a website for your business using portals like WordPress or Squarespace. ये एक Instagram page से थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है. You must mention clearly the subjects you teach, your qualifications in that particular domain, and a little bit about yourself as well. Register yourself and make your profile on online portals for tutors like Superproof, Urban Pro, MyFaveTutor, etc. इन प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. अब बात करते हैं एडटेक प्लेटफॉर्म्स की. If you want to work with an edtech platform, a few good and popular ones are Byju's, Vedantu, Khan Academy, FlipLearn, etc. These platforms are growing very rapidly in India and are a great way to teach students digitally. Most of them have their own study material and structure, and you may have to go through training to get started. आप इनके Become a Teacher section पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी बिफोर यू आर सिलेक्टेड एंड रेडी टू टीच. हर प्लेटफॉर्म का पढ़ाने का स्ट्रक्चर अलग होता है, सो इफ यू डिसाइड टू साइन अप टू एनी वन ऑफ देम, डू गो थ्रू देयर वेबसाइट thoroughly. How much can you earn as an online tutor? Your earnings as an online tutor can vary depending on the format, the number of hours you teach, the number of students you teach, etc. EdTech platforms पर आप 15,000 से लेकर 75,000 per month तक कमा सकते हैं. With experience and an increased hourly rate, you can earn even more. तो ये था एक overview about the different types of online teaching and the process of making a career out of it.
अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल वीडियोस बनाएं, तो let us know in the comment section below. You can also head on over to the Cool Kanya Women Only Career Community to ask and answer questions, grow your professional network, and build a career you love. Details to sign up are in the description below. And if you like this video, do not forget to share it with your friends who are looking to get into online teaching. We'll see you with another video very soon. Until next time, raise your power.